So welcome all to this next class of a chapter that we have started about ratio and proportion. So welcome all mathematicians, and today we are going to do the next class that we have started. And the goal when we started this class, the goal for 2 weeks was that we will be able to understand interesting and real life examples of ratio and proportion. So we were exploring this chapter about ratio and proportion, and how is it related to the daily life, and how examples from our daily life are related to ratio and proportion. So we also saw there are two types of proportion. One is the direct proportion and inverse proportion. So this is about the whole chapter. The chapter name is direct and inverse proportion. If we see what we did throughout these 2 weeks, the first thing that we did was understanding what is ratio and what is proportion. Second was differentiating between direct and inverse proportion using real life examples. We had examples where we were reading it and then we were trying to I differentiate between is it an example of direct or is it an example of inverse proportion. The third lecture that we did yesterday, what we did was we took sums and then we solved it, and it was related to direct proportion ka sum. We identified it, we used some steps, and then we solved it. Today what we are going to do is we are going to study how to solve sums for inverse proportion. Okay, now so this is done, and we are on the third. Just to reiterate our mastery goals, I have told you many times on this YouTube video also, as well as a room class. That is a class at the end of our last unit, we were at 9 marks out of 20, and our last goal is that we should be around somewhere around 15 for this end of unit assessment, which is going to happen in first week of Feb. Okay. Now, what is the goal for today? The goal for today is same as the last class, because it's more of a continuation class. Just last time we solved sums which were related to direct proportion, and we are focusing on solving sums which are related to inverse proportion in this class. So we'll be able to identify direct and inverse proportion and then solve sums for it. Great. Now, just to recap, what is ratio and proportion? So any number written in this form, and the form is this a by b. So a by b can be anything. So 2 by 3 or 5 by 8, or any number written in this form is called this a by b. So it can be 2 by 3, 5 by 8, 7 by 5. Anything written in this form is called ratio. So what is proportion? Proportion and ratio are similar words, just there is a difference in how it expressed. For ratio we write 2 by 3, and in proportion we use this two dots. We write the first number here, which is 2, and जो नीचे का number है we write dot के right hand side. So ऊपर का number is written dot, two dots के ये side, ये left hand side, and the other number is written on the right hand side. I hope this is clear. I have done this a lot of times. So you can, if you have not written down or you're watching it for the first time, please make sure you write this. Now, there are two types of proportion, as I mentioned, direct proportion and inverse proportion. What I want you to do is now pause the video, take your time, and right now just write the meaning of direct proportion and inverse proportion, what you understand from both the words. We have done this a lot of times, so please pause the video for 2 minutes and write down the meanings as you understand it. Okay. I hope you paused the video and wrote down any meanings, and we'll see through it examples. So what is direct proportion? So as I pointed out, there are two quantities as we write ratio proportion. एक तो जो number ऊपर लिखते हैं और एक number नीचे लिखते हैं. So the number that we write up is called a numerator, and the number that we write down is called denominator. Now direct proportion मतलब क्या? समझो अभी for example numerator and denominator is changing. मतलब पहले था 2 by 3, अभी कुछ और बनने जा रहा है, and if numerator increases and the denominator also increases. So 2 से numerator went to 5, denominator from 5 went to 8. तो दोनों नंबर इंक्रीज हुए, मतलब न्यूमरेटर भी इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हुआ. This type of example where both the number increases or both the number decreases, मतलब अगर न्यूमरेटर 2 से 1 गया और डिनोमिनेटर 2 से डिनोमिनेटर 3 से 1 गया, तो दोनों कम हुए. So they behave the same way, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर behave the same way. अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होता है. Whenever this happens, we say that both the numbers are in direct proportion. So inverse proportion क्या होगा?
very as the word suggests, it's quite self explanatory कि अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होगा और डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, मतलब दोनों अलग अलग वे बिहेव करेंगे, या न्यूमरेटर इंक्रीज होगा और न्यूमरेटर डिक्रीज होगा और डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा. ऑलवेज रिमेंबर, it's not just numerator will increase and denominator decrease. It can be other way around also. Numerator can decrease as well as denominator can increase. I hope this is clear. Now what are the examples? If I read this example, if you get 5 books in rupees 1000 and if you get 10 books in rupees 2000, then what type of example is this? Please stop the video, think about it, which type of example is this? So there are two things here. First is books and second is money. Okay, so there are two things. Obviously first is books and second is money. So if we find a ratio between these two, मतलब मैं books and money का ratio find करता हूँ, and I had cleared this last time also. It can be money by books also. मतलब आप money भी ऊपर लिख सकते हो, books भी नीचे लिख सकते हैं, as long as it is not given कि किसका ratio है. यहाँ पे किसका रेशियो दिया नहीं है, तो I can write books by money also, money by books also. तो फर्स्ट केस में there were, if you get 5 books, तो books कितने थे? 5. If in 1000 rupees, so money कितना है? 1000, so money is 1000. Second में if you get 10 books, so books is 10 and how much is money? 2000, so money is 2000. Okay, so I hope this is clear. Now we will see both the ratios कि numerator बढ़ा denominator बढ़ा, क्या हुआ? We'll see. So if I see this, the numerator has increased from 5 to 10 and denominator has increased from 1000 to 2000. मतलब दोनों भी increase हुए, numerator भी increase हुआ and denominator भी increase हुआ. So this was an example of direct proportion because both are increasing. I hope this is super clear to you. Please write this down and we'll go to the next example. And next example we did quickly as we have already done this example a lot in our class. If two people are can paint a wall in 5 days and 6 people paint the same wall in 2 days, then which type of example is this? Direct proportion or inverse proportion? There are two things here. One is people and number of days. So अगर हम रेशियो निकालते हैं number of people and number of days के बीच में, तो पहले एग्जाम्पल में there are 2 peoples, तो ऊपर कितना आएगा? 2 people and they are painting the day in 5 days, so number of days is 5. Great. Second case में there are 6 people, the number of people is 6 and how many days? There are 2 days. So now if you see this, if you compare the ratios, now 2 से एक चीज हो गया 6 and 5 से एक चीज हो गया 2. So numerator increased from 2 to 6 and denominator decreased from 5 to 2. So you can clearly see that दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है. So this is an example of inverse proportion. Now we also looked at the step at how to solve the word problems, and this we did last time. Okay, if we can buy 5 books for rupees 1000, then how many books can we buy for 4000? Okay, that's a 4000. Okay, that's a 4000 by the way. Yeah, you can also take 400. If we can take 400, you can take 400 right now. I've written 400. So अभी सोचो, रियल लाइफ एग्जांपल में सोचो, अगर आपके पास 1000 है और आप 5 बुक खरीद रहे हो, तो अगर आपके पास 400 है, मतलब अगर पैसा कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आप बुक भी कम खरीद सकते हो. तो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. मतलब व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड? फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट तो आइडेंटिफाई करना है सम डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है. वेरी गुड, पहला ये स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप इज कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टू थिंग्स. अभी जो दो थिंग है, मतलब यहाँ पे अभी नाउ व्हिच आर द टू थिंग्स? One is book and second is money. Now you are going to find the ratio between them. Third step was very important. Divide and find the answer. And we learned this. And we also figured out that this is an example of direct proportion. What we will do here today new is we'll learn how to solve the sums for inverse proportion. And there is something different which you should remember from what you did for direct proportion. Now this is a sum. If 2 workers can paint a wall in 4 days, then how many days will 4 workers it? Okay, 2 वर्कर एक वॉल है उसको 4 दिन में पेंट करते हैं. इमेजिन करो 2 लोग हैं, एक वॉल पेंट कर रहे हो, 4 दिन लगते हैं. तो अगर 4 लोग होते हैं, मतलब और 2 ऐड करते हैं, 4 लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग वो वॉल कम दिन में पेंट करेंगे.
So it's an example of which we should identify. So what are the steps? First step is same. Okay, first two steps in both the sums, direct as well as indirect are same. पहले तो identify करो which is the type. Is it inverse proportion or is it direct proportion? The second is find the ratio between the two things. हर सम में दो थिंग्स रहेंगे, पैसा या टाइम रहेगा, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ डेज रहेंगे, चॉकलेट्स या मनी रहेगा, कुछ दो थिंग्स रहेंगे. थर्ड इज डिफरेंट, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना. इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन का सम्स यू आर डिवाइडिंग. इफ आई विल जस्ट गो बैक, in the direct proportion ka sums you are dividing. Okay, but in this type of sum, which is in inverse proportion sums, you will multiply. See, in direct proportion, this is an example of direct proportion, you are dividing. See the step 3, divide. But in this type of sum you will multiply. Now हम लोग step 1 पहला solve करते हैं. We'll solve this sum. Okay, now we'll solve the step 1, which is this proportion. Please take time and think ये कौन से type proportion है, inverse proportion है या direct proportion है. Please take time and think. Okay, I will just go a little faster as I hope you're clear with this. ये कौन से type of proportion का sum है. We have done this a lot of time. So there are two things. पहला तो step 1, एक तो है वर्कर्स एंड अदर इज नंबर ऑफ डेज. ये दो चीज है, ये तो क्लियर हो गया. एक तो है वर्कर्स एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ डेज. तो नाउ इफ यू थिंक लॉजिकली ऑल्सो, अगर ज्यादा वर्कर आएंगे तो जल्दी काम होगा. इफ यू कैन डू इट क्विकली तो कम दिन लगेंगे. इसलिए अगर हम इन दोनों का प्रपोर्शन लेते वर्कर्स एंड नंबर्स का, तो अगर वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे. इसके लिए इट्स एन सम ऑफ इनवर्स proportion. Okay, this is clear. And now go to the step 2. Step 2 अभी क्या है, रेशियो लेना. Now रेशियो किसमें लेना है, जो दो चीज दिए. अभी दो चीज क्या है, एक तो है वर्कर्स एंड दूसरे है डेज. वेरी गुड. सो वर्कर वी हैव इन द फर्स्ट केस वी हैव 2 वर्कर्स, वी हैव 4 डेज. मतलब वर्कर के जगह पे मैंने लिखा 2, डेज के जगह पे मैंने लिखा 4. ये फर्स्ट केस है. अभी सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में मेरे पास वर्कर्स है 4 और डेज हो गए फाइंड करना है. इसके लिए मैं लेता हूं एक अल्फाबेट विच इज एम. आई होप दिस इज क्लियर, द सम इज क्लियर. कि आई जस्ट फर्स्ट स्टेप 1 में आई जस्ट फाउंड आउट विच टाइप ऑफ प्रपोर्शन इज इनवर्स और डायरेक्ट. सेकेंड में आई फाउंड आउट द रेशियो बिटवीन द टू थिंग्स, वर्कर्स एंड डेज. तो पहला केस में वर्कर्स 2 थे, डेज 4 लग रहे थे. सेकेंड में देयर आर 4 वर्कर्स एंड वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी डेज इट टेक. सो विल जस्ट डू एम डेज. नाउ pay attention here, there is a change and there is a big change. इनवर्स प्रोपोर्शन में आप ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे. दिस सामने सामने जो नंबर्स है उनको यू विल मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू लिखोगे. व्हाट वर यू डूइंग इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हाट वर यू डूइंग इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाज, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यू आर डिवाइडिंग द नंबर. कौन से दो नंबर को डिवाइड कर रहे थे, ये वाले जो नीचे नीचे है, उन दोनों को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, डिवाइड. बट व्हाट वी विल डू इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम सामने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे के जो सामने सामने. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू मिस दिस यू विल मिस द होल सम. इफ यू गेट दिस यू विल गेट द होल सम. ओके, सो दिस इज द मेक और ब्रेक स्टेप ऑफ दिस टाइप ऑफ सम. अगर ये आ गए तो अब इजीली सम हो जाएगा. अभी तो मैंने सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिए. तो इफ आई गो बैक तो उधर क्या था, देखो 2 4 सामने सामने थे, 2 and 4. इफ आई विल जस्ट एनोटेट इन मार्केट, ये 2 एंड दिस 4 इज सामने सामने. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नीचे वाला 4, सामने 4. सो वो एक दूसरे के साथ है, तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड राइट इट डाउन. इफ आई गो अहेड तो 2 into 4 लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड. नीचे क्या है, नीचे इज 4 into m इज इक्वल टू करके मैं 4 into m लिखूंगा. आई होप दिस स्टेप इज वेरी क्लियर. आई रोट 2 into 4 इज इक्वल टू देन 4 into m. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर विच इज 2 4s are 8. So I multiply this number which is 8. तो 8 is equal to 4 by m. अभी मुझे फाइंड क्या करना है, m. तो m में वे साइड ही रहने दूंगा क्योंकि m ऊपर है तो मैं इजीली फाइंड कर दूंगा. तो आई विल जस्ट कीप इट देयर. नाउ आई हैव टू टेक दिस 4 डाउन.
ये 4 में यहाँ पे लेके आऊंगा, जो बनेगा डिवाइड. ऑलवेज रिमेंबर दिस, वी हैव डन अ लॉट ऑफ टाइम्स, लॉट, even when we are learning new type of sums we are doing this. Now whenever एक एक नंबर यहाँ पे होता है और हम अल्फाबेट फाइंड करना रहता है, इसके साथ जो भी नंबर है उसको ये साइड लेके आने का, पर वो नीचे आ जाएंगे डिवाइड. ओके, सो 8/4 इज जस्ट 2, तो नंबर ऑफ डेज इज 2. So in this type of sum the number of days will be required is 2. If you don't know how ये 4 नीचे आया, कैसे आया, then I have made a separate video for it. Okay, please say it. Okay, ये 4 कैसे नीचे आया, क्यों नीचे आया, ये 8 क्यों नहीं वो साइड गया, ये like you can ask the question also, ये 8 ये साइड क्यों नहीं आया. So I have made a separate video for it. Please see it. Okay. Now we'll do another type of sum. If you drive a car at 50 km/h, it takes 5 hours to reach a place. Then how much time should it take if you drive the car at 70 km/h? This is the question. Please stop the video. Please write the question and solve it on your own. पहले don't see the video है, okay? वीडियो को देखो ही मत, pause the video और close the video. पहले खुद solve करो. You know the steps. There are 3 steps. What is the first step? First step is you will identify whether it's a direct proportion or inverse proportion. Second thing is you will find the ratio between the two things. And third thing is you will multiply and find the answer. तो पहले तो लॉजिकली सोचो, ये इनवर्स है कि डायरेक्ट है. अभी लॉजिकली अगर हम सोचेंगे तो इफ वी आर ड्राइविंग द कार एट 50, it takes 5 hours. ठीक है, नाइस. नाउ इफ वी इंक्रीज द स्पीड, लॉजिकली सोचो, अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली द टाइम विल बी लेस बिकॉज इंक्रीजिंग द स्पीड. सो अगर एक चीज इंक्रीज हो रहा है, दूसरा चीज डिक्रीज हो रहा है, speed is increasing but time is decreasing, so it's an example of inverse proportion. So this is an example of inverse proportion. Great. Now we have to find the ratio. रेशियो किन दो चीज के बीच में आएगा? एक तो रहेगा स्पीड, वेरी गुड, दूसरा रहेगा टाइम. नाउ द फर्स्ट केस, व्हेन द स्पीड इज 50 it takes 5 hours. So when the speed is 50 it is taking me 5 hours. That's the first case. What's the second case? If the speed is 70, how much time should I take? तो स्पीड के नीचे मैं क्या लिखूंगा? पहले तो लिखूंगा 50. ग्रेट. देन आई विल राइट 70. हाउ मच आवर्स? व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप आई विल जस्ट मल्टीप्लाई, सामने सामने, मतलब 50 into 5 is equal to 70 into m. सामने सामने मल्टीप्लाई करने का. ओके, सो आई विल जस्ट 50 into 5 is equal to 70 into m. I hope this is clear. Now I can multiply the left hand side क्योंकि ये दोनों numbers है, ये number है, ये alphabet है, वो तो I can't multiply, so I can just multiply the numbers. 50 into 5 is 250 is equal to 70 into m. तो m को यहाँ पे ही रहने दो and 70 को नीचे लेके आओ. I can cancel this 0, I can cancel this 0. If you solve this, 7 3 is somewhat 21 और 4 बच जाते हैं and 7 5 is 35. So somewhere around 3.5 hours. Okay. If you don't know how to do that calculation also, you can use this. 25 अंदर लिखना, 7 बाहर लिखना, and use the long division method. I hope you know this long division method. जो हम लोग 7 ऐसे लिखते थे और यहाँ पे अंदर 25 लिखते थे, and then you solve it. Then you will get this answer. So the answer is around 3.5 hours. Okay. I hope you understood. Please write down your notes so that you remember when you come to the class. In the class, I won't teach this again. I will give you a short introduction of what to do and take answers from you, and we'll solve more interesting sums. I hope this is clear. Thank you.